Now the exponential relation for the fall of temperature of water body with respect to time is given by theta 0 is to minus lambda t. This is the exponential relation for the fall of temperature of the water body with respect to time is given by theta is equal to theta 0 e raised to minus lambda t. What is theta 0? Theta 0 is the initial temperature of the water, right? Theta 0 is the initial temperature of the water. You know here the initial temperature of the water is 100 degree centigrade, right? Okay. Then theta क्या है? Theta is the temperature after time t. Theta is the temperature fallen after time t. You know, you can see here that after 10 seconds the temperature is fallen to 90 degree. After 20 seconds the temperature fallen to 80 degree, and after 30 seconds the temperature fallen to 70 degree. So theta is the temperature fallen after time t. Is the exponential function. Lambda is the decay constant of water body. Lambda is the decay constant of a water body. Decay constant of a water body, and t is the time. Okay. Now if you take logarithm on both the side, अब दोनों साइड पे log लेते हैं, तो taking log on both the side, you can write log of theta, right, is equal to log of theta 0 plus minus lambda t, right? So taking log on both sides, we get log theta is equal to log theta 0 plus minus lambda t. So taking log on both sides, we get log theta. Taking log on both sides, we get log theta is equal to log theta 0 plus minus lambda t. So taking log on both sides, we get log theta is log theta 0 plus minus lambda t. Where theta 0 is the initial temperature of the water, which is 100 degree. Theta is the temperature of the water after time t, okay, which after 10 second temperature fallen to 90, after 20 second temperature fallen to 80, after 30 second temperature fallen to 70, okay. Is the exponential function. Lambda is the decay constant of water, and t is the time. Okay. Now this is the log which is, okay, the base is e. आपको e base को 10 base में convert करना है, तो you can write this equation as log of theta in the base 10 is equal to log of theta 0 10, और इसको आपको डिवाइड करना है 2.303 से, right? So if you want to convert log from e base to 10 base, you have to divide by 2.303. So log of theta to the base 10 is log of theta 0 to the base 10 minus lambda t upon, you have to divide by 2.303, right? Okay, this equation log of theta to the base 10 is log of theta 0 to the base 10 minus lambda t upon 2.303 is similar to y is equal to mx plus c. So this equation is similar to the equation of straight line. This equation is similar to the equation of straight line. ये जो इक्वेशन मिला हमको, दैट इक्वेशन इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज एम एस प्लस सी. उसका मतलब है कि आप y एक्सिस पे log थीटा लेते हैं, y एक्सिस पे log थीटा लेते हैं, राइट, ओके, और x एक्सिस पे टाइम लेता है, एक कांस्टेंट है, c इज इक्वल log 0 कांस्टेंट है, तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा. ओके, सो लेट अस टेक y एक्सिस पे हमको लेना है log ऑफ थीटा, y एक्सिस पे इफ वी टेक log ऑफ थीटा, x एक्सिस पे इफ वी टेक टाइम t, देन द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, और उसका स्लोप जो मिलेगा हमको, स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी माइनस lambda upon 2.303, right? Slope of this graph, okay, will be minus lambda upon 2.303, okay. So when the hot junction, the burner is removed, and the hot junction of the thermocouple is allowed to cool down itself, okay, its temperature decreases, its temperature decreases from 100 degree to 90 degree, 90 degree to 80 degree, 80 degree to 70 degree. The thermo EMF also decreases as there is a fall of temperature with respect to the time, right? Okay, there is a definite decay constant of the water body, okay, whose temperature falls. Now the exponential relation for the fall of temperature with respect to time is given by the exponential relation for the fall of temperature with respect to time is given by theta is equal to theta 0 e raised to minus lambda t. Okay, if you take log on both the side, then log of theta is equal to log of theta 0 plus minus lambda t.
This is a logarithm with respect to base e. If you want to convert this base from e to 10, आपको बेस e से 10 में कन्वर्ट करना है तो यू डिवाइड बाई 2.303. सो log theta to the base 10 is log theta 0 to the base 10 minus lambda t upon 2.303. Now this equation is similar to the equation of straight line y is equal to mx plus c. So if you take y axis पे आप लेते हैं log theta. If you take y axis पे if we take log theta और x axis पे लेते हैं time t. So if we take log theta along y axis and time t along x axis, the graph will be a straight line. और ये जो ग्राफ है उसका स्लोप m, ये ग्राफ का स्लोप m कितना मिलेगा, लैम्बडा अपॉन 2.303. और c कांस्टेंट है, कांस्टेंट c इज नथिंग बट log थीटा 0, log थीटा 0. सो यू कैन सी दिस ग्राफ. तो ग्राफ बनाएंगे. आपका इक्वेशन ऐसा है, log यस वंस अगेन आई रिपीट हियर, थीटा का इक्वेशन क्या है, theta 0 e raised to minus lambda t, right? So this is the exponential relation, exponential relation for the fall of temperature of a water body. Is temperature of the water after time t theta is equal to initial temperature of the water body is theta 0 e raised to minus lambda t, where lambda is the decay constant of water body. Now दोनों साइड पे log लेंगे तो क्या मिलेगा, log of theta इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी का लॉग कितना होगा, माइनस लैम्बडा टी प्लस थीटा 0 का लॉग कितना होगा, लॉग थीटा 0, राइट. सो दोनों साइड पे आप लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 का लॉग कितना होगा, लॉग ऑफ थीटा 0 प्लस ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी का लॉग कितना, माइनस लैम्बडा टी. अगर ये लॉग को आपको ई बेस में से 10 बेस में कन्वर्ट करना है तो लॉग ऑफ थीटा टू द बेस 10 इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी अपॉन 2.303 से डिवाइड करना पड़ता है प्लस लॉग ऑफ थीटा 0 टी, राइट. चलो ये इक्वेशन तो आप कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से. व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो आपको y एक्सिस पे क्या लेना है, यू टू टेक y एक्सिस पे log थीटा लेना है, राइट. सो y एक्सिस पे आपको लेना है log थीटा, x एक्सिस पे लेना है टाइम t, राइट. सो इफ यू टेक log थीटा along y एक्सिस एंड इफ यू टेक log थीटा along y एक्सिस एंड टाइम t along x एक्सिस, द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. और उसका आप स्लोप निकालेंगे, ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ये ग्राफ का स्लोप m कितना मिलेगा, ये है ना लैम्बडा अपॉन 2.303, राइट. सो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी लैम्बडा अपॉन 2.303, राइट. तो आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो स्लोप की वैल्यू इधर रखो, लैम्बडा डीके कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है अपॉन 2.3. सो यू कैन फाइंड आउट द डीके कांस्टेंट ऑफ वाटर, डीके कांस्टेंट ऑफ वाटर बॉडी लैम्बडा इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स, राइट. Right, so this is the exponential relation for the fall of temperature. Theta is the temperature of the water body fallen after time t is equal to theta 0 is the initial temperature of the water body e raised to minus lambda t, where lambda is the decay constant of the water. Okay, if you take log on both the sides, log of theta is equal to log of theta 0 plus minus lambda t. अगर e पावर e बेस को आपको 10 बेस में कन्वर्ट करना है तो यू नो द रूल, यू डिवाइड बाई 2.303. सो लॉग ऑफ थीटा टू द बेस 10 is equal to minus lambda t is divided by 2.303 plus log theta 0 to the base 10. अब y एक्सिस पे log theta लेते हैं और x एक्सिस पे टाइम t लेते हैं तो the graph will be a straight line because this is the equation of straight line. and slope of this graph, ये ग्राफ का स्लोप m कितना है, lambda upon 2.303. so slope of this graph m is lambda upon 2.303. you can calculate the slope from this graph, put it here. Lambda is the decay constant of the water body divided by 2.303. You can calculate the decay constant for water, right? Okay. Similarly, you can plot the graph of temperature theta against time t. As time increases, temperature theta decreases exponentially. So that will be exponential graph of temperature theta for time. And you can also plot the graph of थीटा अगेंस्ट EMF. ओके, सो आप EMF और थीटा का ग्राफ बनाएंगे तो जब थीटा बढ़ता है तो EMF भी बढ़ता है. सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ओके, सो दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन कैलकुलेट द decay constant for water body using
the thermocouple. So we stop here. Thank you very much.